Hi student. Today I am with new topic articles. Articles play a very effective role in various examinations of entrance test, in which students are given articles, and sometimes these articles baffle to the student. So here we have the 2-3 sessions as we have done in previous reading comprehension sessions. We will do 2-3 sessions on this in order to understand all the possible ways to solve such MCQs in proper way in order. Dear student, A, N and the are articles, and they are they comes in parts of speech as adjective, I mean demonstrative adjective, and sometime the especially that is even used as determiner in the grammar. So we have three words: a, n, or the, or the. These are the three words in which we have to discuss how to use them in this way. Article word has a meaning, many other meaning as well. Sometimes we say article is a piece of writing or a story. Sometimes we say it is a part of law. Sometimes it is item of things, objects. But here in this grammar, article means a and the, and we are putting such words before noun, countable noun or uncountable noun. Article has two types, are divided into two types. One is definite article and another is indefinite article. Definite article comes only one word, the or the. Indefinite article comes especially two words, a and n. First come towards this indefinite article. If I say this article can be determined, can be identified before singular countable nouns, it means we will put a and the, a and n before singular noun which must be countable. See, indefinite article is a and n. A comes with consonant sound, n comes with vowel sound. A, the choice between a and n is determined by sound practice. Whenever you have been given any singular word and singular noun countable, you have to not to see physically what would be there, as we have traditional practice is told in the low classes, as whenever you have singular noun and you have to put a, e, I, o, u and then you put an article. That is wrong traditions in this way. That was wrong concept. We cannot do this one that we have to do in this regards. Another one is n, and both a and n both are even determined by the sound practice. Sound practice what? One is consonant, we say in Urdu or Hindi as harf-e-sahi. Vowel, we say traditionally word, but actually the correct pronunciation of that in vowel. The vowel we say in local language as harf-e-illat. Right? So this sound practice we have to do. A and N, we have to practice in this way to determine the things. See, what is vowel sound? Vowel sound, the word comes as one puff of sound from inside,
without touching of part of articulation. वातमा अंदरमा को आवाज निकरे थो कैसा भी ये टच न करे ऐं आवाज जो सेलेबल फर्स्ट सेलेबल बाहर निकरी अचे कैसा भी टच न थिए छा टच थींदा आहिनि टंग टच थींदी आहे पैलेट टच थींदी आहे वेलर टच थींदो आहे ग्लोट टच थींदो आहे लिप्स थींदा आहिनि नसल थींदा आहिनि वेलम थींदा आहिनि दीज आर द पार्ट ऑफ स्पीकिंग पार्ट ऑफ आर्टिकुलेशन without touching them comes in out. These words are like a, a. We say like that, a. That is the actual identification, determination of the knowing, understanding the word properly. It is not the relationship with A, E, I, O, U, but the sound practice in this regards. The remaining words are even comes as consonant. We have the word that comes from inside even to touch with any part of articulation. I mean lips, tip of the tongue, palate, velar, gloat, something like that. So whenever we have the sum, we have to decide whether what we have to put there. See here, there is a list as I have written here. What we have to do, we have to practice in this way. We have two A and N, and I have made the list in this regards. The word is here, as I have told, the word EWE. We have many words like AWE, we have EVE, we have EWE. These are the words. See, we say this word AWE like A. A means respect. Respect in fear, especially when we are at home, parents come at home, we are very much conscious to stop our activities and we have some sort of a fear of the elders. We say respect in. See, EWE, that word is maybe day before a special day, maybe event, maybe evening. This word is a clipping word, and the full word we can say we say in this way, like determine a, u. But this word we cannot use, even E is there, but that is consonant sound. We pronounce like this, you. Whenever you, there you will feel that the word, the sound even to be determined by the part of articulation, we must use here what? That would be a U. What is U? You have the word sheep. Sheep has genders, masculine and feminine. Sheep masculine is ram and feminine is ewe. Ewe is female sheep. That's why the word is ewe. The another word is union. See, if you compare this E with this E, this is U and this is egg. An egg. Both are singular. Both are singular. Coming towards again, U, here is also U. But we are not identify U is there, we put because basically we know A, E, I, O, U. These are vowels basically, traditionally. Sometimes W and Y are semi-vowels because of connection the words. Vowel has two functions. One is sound practice and another one is to connect consonant letters with the things. Right? Or union, is U is here, U is here. See, but we cannot decide because of the U, but we decide how to pronounce first. See, union and umbrella. What we have to do? We have to make here a, here
because this is a union, this is an umbrella. Here is a, here is ye, here is ye, here is a, like that. Very typical word in English, especially the word one and ones. See, one, what we use? A1, O, but we use W. Bilabial practice of the part of articulation. A1. Same O is here, but orange, orange, and orange. Like that. See here, that is very typical word, and it this word even has been shown in question papers. This is a battery, but in the sound practice we say double A battery, double d. There's no any d, but double because of we use the word a double A battery. Right? Apple, familiar word, an apple. Here is EWER. As we have this word is also the meaning is a utensil, the part of a kitchen. We use what is a ewer. Here is the word X-ray. X is consonant, but here word start from a. We say an X-ray. And there are many letters in English alphabet in which we are making abbreviations, not acronyms. We use abbreviations, I mean short forms, like MBBS. M is consonant, but MBBS start from A. MA, MBBS, MSc, MCOM, F16 words are there. These words are no doubt, these letters are vowels, but under that, see, F, M, H, L, N, R, S, X. इन्हनि सभिनी वर्ड्स में वर्ड हीअं थो अचे पियो अ, ए, उ. इन्हनि सभिनी में ईंदो आहे जेकॾहिं इहे अलॻि अलॻि अचनि, जीअं हिन महिल असां वटि अची वियो एक्स रे. छा पवंदो इन्हनि में? एन एक्स रे, या हे एफ एम हुजे, एफ एस सी हुजे, F16 हुजे, छा इस्तेमालु कंदासीं? एन F16. हिस्ट्री वर्ड आहे. जॾहिं तव्हां इंग्लिश ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में वञो त तव्हांजे लाइ हिते वर्ड पवंदो अ, हिस्ट्री. पर जेकॾहिं तव्हां हिन वर्ड खे ॾिसंदो हिस्टोरिकल प्लेस, त हिते तव्हांखे मिलंदो एन हिस्टोरिकल प्लेस. पर हुन में ऑप्शन ॾिनल आहे. ऑप्शनल मतिलबु स्लैश ॾिनल आहे. त हुन में लिखियलु आहे त जेके नेटिव लैंग्वेज हूंदा आहिनि उन्हनि खे एन करे पढ़ंदा, पर जेकॾहिं नॉन नेटिव उनखे अ हिस्टोरिकल प्लेस पढ़ंदो. एडजेक्टिव में हिते स्ट्रेस थो अचे त उहो बि सही हूंदो. बहरहाल हीउ थोरो डिफरेंस आहे हिन जे मुताबिक़. हिते ॾिसो, रुगो साउंड प्रैक्टिस रुगो लेटर्स में न, फिगर्स में बि थींदी आहे. हिते लिखियलु आहे 17, हिते लिखियलु आहे 18. 17 years girl, 18 years girl. पर 17 में छा थो अचे? जीअं हिते हुयो ए, साउंड में छा? डबल. हिते आहे 17. 17 में असां छा था ॾिसूं पिया? एस थी अचे पई हिते. एस मीन्स एस जो पैलेट सां टचिंग थी थिए पई. छा इस्तेमालु कंदासीं? 17 years girl. 18 में छा थी अचे पई? 18 years. and 18 word 18 years girl. हिते उन खां पोइ हीअ त थी आहे वर्ड्स. पर डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल जो हिकिड़ो ॿियो फंक्शन बि आहे, त जेकॾहिं उन जे अॻियां एडजेक्टिव अची थो वञे, उन जे पोयां सिंगुलर नाउन आहे, त उते बि असां छा इस्तेमालु कंदासीं? उते बि असां इहे आर्टिकल इस्तेमालु कंदासीं, बशर्ते हिकु उहो जेको एडजेक्टिव खां पोइ नाउन ईंदो उहो छा हुजणु घुरिजे? उहो बि माना सिंगुलर हुजणु घुरिजे. लाइक असां वटि आहे यूनानिमस डिसीशन. हे जेको डिसीशन आहे इहो सिंगुलर हुजणु घुरिजे, पर हे जेको आहे साउंड में हे खणंदासीं असां. छा खणंदासीं? यूनानिमस थो अचे, इन जे करे हेॾा खणंदासीं. हेॾा हुयो हिस्टोरिकल प्लेसिस. बट वन थिंग मोर आई वुड से, कॾहिं बि जेकॾहिं तव्हांखे पॉसेसिव प्रोनाउन जे अॻियां अची वञे, चइजे त हिते आर्टिकल इस्तेमालु कयो, त तव्हां नथा करे सघो. तव्हांखे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन नाउन में हिकिड़ो फादर आहे. फादर में छा पवंदो? फादर में पवंदो अ फादर. पर चइजे वेयर इज़ योर फादर, हिन में आर्टिकल कहिड़ो लॻंदो? छो त हिन में पॉसेसिव प्रोनाउन पहिला, इन करे न लॻंदो. हिकिड़ो आयो वेयर इज़ योर, ऐं हे लफ़्ज़ पहिरियों हुयो EWER. वेयर इज़ योर क्वेश्चन मार्क. आर्टिकल कहिड़ो इस्तेमालु थींदो?
हाणे यक असां पिया चऊं त केरु पियो चए जेको बि चए यूअर पियल आहे त इन जो मतिलबु आहे अ यूअर पवंदो, ठीकु आहे पवंदो, पर अॻियां छा पियल आहे पॉसेसिव प्रोनाउन पियल आहे, इन जे करे इन में को बि हिते आर्टिकल न पवंदो बिकॉज़ ऑफ पॉसेसिव प्रोनाउन। डेफिनेट आर्टिकल ते हिन सेशन हिन अॼु जे सिटिंग खां पोइ हिकिड़ी लिस्ट आहे पूरी मां तव्हां सां उहा शेयर कयां थो, उन ते डिस्कस बि कयूं था। इन खां पहिरियों अचूं त हिन ते असां अचूं वरी असां वटि ॿियो क्वेश्चन आहे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में ॿ अची था वञनि पिया, डेफिनेट आर्टिकल में ॿ अची था वञनि, हिकिड़ो आहे माना वर्ड द, पर इनखे कॾहिं कॾहिं असां इस्तेमालु कंदा आहियूं छा, इनखे इस्तेमालु कंदा आहियूं या इस्तेमालु कंदा आहियूं दी या इस्तेमालु कंदा आहियूं द। हाणे इन्हनि ॿिन्ही में द ऐं दी में हिकिड़ी शइ जे ज़हन में रखो, साउंड प्रैक्टिस हूंदी आहे, कहिड़ी, इहो दी आहे या द आहे। हाणे अचो हिननि ते, हिन हे लफ़्ज़ आहे डेफिनेट आर्टिकल, हिन जे लाइ इनखे चवंदा इहो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तौर पे इस्तेमालु थींदो आहे, डिटरमाइनर तौर पे इस्तेमालु थींदो आहे। द साउंड में छा आहे, इहो वीक आहे, शार्ट आहे, अनस्ट्रेस आहे, हीअ केतिरा जो पिया द द। ॿियो हूंदो आहे दी द दी, फ़र्क़ु आहे। द चवंदासीं इहो ॼणो स्लाइटली असां हुनजो आवाज़ कढियोसीं, पर जेकॾहिं अची वञे छा ॿियो लफ़्ज़ अची वञे दी, उन लाइ छा इस्तेमालु था कयूं पिया, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग, अनस्ट्रेस्ड, जीअं हिन में लिखियल आहे। जेकॾहिं द अचे त इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉन्सोनेंट, जीअं हिन जी प्रैक्टिस हुई द ऐं दी त इस्तेमालु कयूं पिया, इट इज़ नॉट अ रिटन, हीअ हुई असांजी साउंड प्रैक्टिस, पर हीअ जेका आहे इहा रिटन प्रैक्टिस आहे, हूअं आर्टिकल जी प्रैक्टिस में, पर हिते साउंड प्रैक्टिस में थी अचे पई। साउंड प्रैक्टिस में कीअं, सपोज मां चवां त हिकिड़ो आहे हिते, हे ॾिसो हिते एक पियल आहे, हिते यू पियल आहे, पर हिननि जॻह ते असां तव्हांखे चऊं त हिननि में तव्हां आर्टिकल द ॿिन्ही पासनि ते रखो, त हिन में दी कहिड़ो आहे, द कहिड़ो आहे। जिते पियल आहे हे ई डब्ल्यू ई, हिते असां इस्तेमालु कंदासीं छा, इहो आहे द यू, हिन में इस्तेमालु कंदासीं जंहिंमें साउंड प्रैक्टिस में वाउल थो अचे उते इस्तेमालु कंदासीं दी एग, सेम डिटर्मिनेशन कंदासीं, पर इहा बि एॾी ज़रूरी कान्हे, रुगो ॿुधाइण जे हिसाब सां आहे। चए थो इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज दिस वर्ड द, बट whenever we have, if the next word starts with a vowel sound, we use what? The. For example, we have sentence, I prefer dash effervescent water than dash tepid water. हिकिड़ो आहे टेप्ड वाटर, ॿियो आहे एफरवेसेंट वाटर। हाणे हिननि में छा था इस्तेमालु कयूं पिया, ही अ सां शुरू थो थिए पियो, एफरवेसेंट वाटर, काउंटेबल अनकाउंटेबल बि आहे, को बि असां इस्तेमालु न कयूं पिया, हिते असां दी चवंदासीं, हिते असां द चवंदासीं। अहिड़े तरीक़े सां हे आहे वेयर इज डैश यूनिवर्सल रिमोट, यूनिवर्सल, जीअं हिते हुयो य, हिते बि य, हिते बि असां इस्तेमालु कंदासीं छा, द, बिकॉज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ॿियो आहे डिड डॉक्टर गेट डैश MRI फ्रॉम एकेले, हिते MRI हिन वांगुरु आहे, हिननि लेटर्स वांगुरु आहे, हिन में बि इस्तेमालु छा कंदासीं असां, अ थो अचे पियो, हिते अ थो अचे, इन जे करे इहो MRI बि थी सघे थो पियो, पर जेकॾहिं द जो इस्तेमालु आहे त हिते असां दी चवंदासीं हुन जे मुताबिक़, ठीकु आहे। इहो MRI छा आहे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, हिन जो फुल फॉर्म आहे, उन जे मुताबिक़ असां इस्तेमालु कंदा आहियूं। कॾहिं कॾहिं हिन में वरी हिकिड़ो बिग डिस्टेंस छा चइबो एक्सेप्शनल बि अची वेंदो आहे, कॾहिं कॾहिं कुझु किताबनि में इहो लिखियलु आहे त जेकॾहिं तव्हां इहो डिफरेंस नथा करे सघो द ऐं दी जो, पर जेकॾहिं पढ़ी था वञो पिया माना वाइस वर्सा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हिन में माना टियों ऑप्शन इहो न, दैट इज बिग एक्सेप्शनल, इवन इंग्लिशमैन, दोज आर द नेटिव ऑफ दैट, they are even using such things are making the things in this way, that is exceptional, that is allowed you people to use in this way. So this is just introductory part of this one, and we have the session in the last of that, there is a page in which we have some chosen words, how to use a and the, that will help you a lot, especially to choose in examinations how to use them, how to attempt MCQs in this regards. Coming to the
page in this way. Thank you very much. Dear student, here is a comprehensive list. You will find many words pertaining to consonant sound and vowel sound, and in the other section there is a definite article, the, where to use and where we are not in a position to use. This is very comprehensive list, is taken from various grammar books that will help you a lot in this regards. Especially I would say the words are written from indefinite article as a you, a your, a euro, a hotel, a mustache, a utensil, etc. But when you will go especially to see such kind of words, URL, and I have written in underline acronym. Acronym means the word pronounced like word, but that is short form. कुछ वर्ड शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन हूंदा आहिनि जेके लेटर्स में हूंदा आहिनि, कुझु शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स में हूंदा आहिनि, जीअं वर्ड हूंदो आहे WHO, इहो असांजो शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन में आहे. कुझु वर्ड्स शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स में हूंदा आहिनि, जीअं यूनेस्को. हिते वर्ड आहे URL, हिकिड़ी स्पेलिंग आहे पर एक्रोनेम आहे, माना इन जो मतिलबु आहे हिनखे वर्ड में उचारणो आहे त लिखियल बि छा में आहे माना इन जो मतिलबु आहे इहो युरल या हूंदो या अरल हूंदो. हाणे लिखियल आहे त इहो युरल आहे हिते. ठीकु आहे. सो अहिड़े क़िस्म जा काफ़ी माना हिते लिखियल आहिनि. ॿिया ॾिसो, हे लिखियल आहे UTOPIA, दिस इज़ अ यूटोपिया. xylophone, a netto, a UFO, a unicorn, a motel, a PhD, a bitboard, a toothache, a backache, a European, unique design, one हेॾे वरी ॾिसो एडजेक्टिव ऐं नाउन गॾु आहिनि. वन डे कॉन्फ्रेंस, अ ब्रोकन एग, अ हम्बल मैन. हिन पासे ॾे वरी ॾिसो एन वारा, जिन में हिकिड़े पासे ॾे वर्ड लिखियल आहिनि. कहिड़ा लिखियल आहिनि? एन UFO, an F-16, an LLB, an SDO, an archaic, an octopus, an igloo, an X-ray, an S, an ASS, an Eve, an eel, an R, an usher, an honor, an orphan. So these are an igloo. This is last an double A meeting. What is that? An double A meeting. Right? An AA meeting, an HIV test, an FBI agent, an idiot action. So these are the words is written in the way to deal in the way in life. Okay, after that we have some expressions. See, number one, he thinks he is a Shakespeare. Why a word A is written to common proper noun? The proper noun generally do not take article. When a proper noun used as a common noun, you must bring RN. So will come in indefinite or definite article. Sometime proper noun become common noun, we use definite article. But when we are not sure about that, then we are using A or N with even names. As it is written in second year, do you know a Mrs. Judy O'Kendam? 20 minutes with Judy O'Kendam. छो लिखियल आहे हिते? माना इन जो मतिलबु आहे त असां इन जूडी ओकेंडम जे लाइ अनफेमिलियर आहियूं, ख़बर कान्हे का. ॿियो वरी हिकिड़ो एक्सप्रेशन ॾिसो, sometime comes before determiners. A few, a little, a lot. छा खणंदा आहिनि इहे? काउंटेबल बि खणंदा आहिनि, प्लूरल बि खणंदा आहिनि. A few, a little, a lot, a most, etc. In case of many or n comes after. See, I have a few friends. ॿियो ॾिसो, there is a little milk in the jar. Many a fan has. ठीकु आहे. Many a fan has welcomed. Not non count जेके हूंदा आहिनि उहे त आर्टिकल खणंदा ई कोन्हनि के. उन्हनि में कहिड़ा कहिड़ा आहिनि? उन्हनि में इहो थो ॿुधाए पियो त कुझु
छा में हूंदा आहिनि आर दोज़ विच आर यूअली कैन नॉट बी काउंटेड फॉलोइंग आर सम कॉमन एग्जांपल्स जेके फूड में हूंदा आहिनि ड्रिंक में हूंदा आहिनि बेवरेज में हूंदा आहिनि बेकन बीफ ब्रेड ब्रोकली बटर cabbage candy cauliflower celery cereal cheese chicken chocolate coffee corn cream these are uncountable or noun count fish, flour, fruit, ice cream, lettuce, meat, milk, certain food, non-food substances, air, cement, coal, dirt, gasoline, gold, pepper, most abstract noun, advice, anger, beauty, confidence, courage, fun, happiness, health, area of study, I mean subjects, sports, football, baseball, hockey, language, China, Spain, they are not they do not take any article itself themselves. Other clothing, equipment, furniture. So take the screenshot, and these are the words selected by different books, and they have even associate to you for entrance test. So study accordingly in this regard. So this is list. Again, I would suggest you to take a screenshot of this page and also take the screenshot of this page.